today's class. Today we'll be doing the next chapter, which is called the unit load method. Okay, unit load method. Uh, we can find deflection and rotation. Okay, we can find the deflection and rotation. If in the question, if it is not mentioned, you can use any method. But if it is mentioned that you have to do it, you have to calculate or you have to analyze the structure with unit load method, then you need to use that. So you need to study that. Okay. We have already mentioned this in the previous notes and videos that it is a force method of analysis. Okay, and it can be used for both determinants and indeterminate structures. हम लोग दोनों का न्यूमेरिकल करेंगे, determinate structure and indeterminate structure. Now, unit load method is also known as virtual work method. Virtual work method वही है जो आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा. Virtual work method. Okay. Those things, it is almost similar, but I think so in engineering mechanics, indeterminate structures was not done. Okay, or maybe just a introduction was given in the your engineering mechanics. So what happens? What you need to remember, it's a force method of analysis. It can be used both for determinate and indeterminate structures. Sometimes, if you do not know what method to use, if you get confused, or if you are confused with the indeterminate or determinate structures, then you can use this method. It's a common method, like Castigliano's method. Now, what is the basic principle? Like I have written now, what is the basic principle of unit load method? Like it is the external work done. Okay, external work done. External work done मतलब due to external load. जो भी मतलब मान लीजिए, if it is a simply supported beam, there is a load out here, which is P. Okay. Now, because of this load, whatever be the work done कैसे होगा? Work done simple. It can be, if this is P and if here is the deflection is delta, then P into delta is the work done, external work done. So external work done must be equal to internal energy stored. I think so. We have already used this principle before. Okay, this is the basic principle of work unit load method or virtual work method. It's the same. Okay. Number 5 is using unit load method, deflection and rotation at a point can be calculated. Now, this is very important. Like I can find using this method. I can only find if deflection at one single point is asked. Okay, मुझे I cannot say based on this method. I cannot say what will be the deflection entire way. मुझे ये नहीं पता होगा यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा. So I do not know the deflected shape. मतलब if I am putting some load out here, if I am putting some, मान लीजिए I put a load out here, which is 10 kilonewton. Now because of 10 kilonewton, I may know what is the deflection here, but based on this information I cannot know what is the information, what is the deflection out here. मतलब ये जो deflection curve है, मतलब पूरा जो deflection curve है, इसका ये curve होगा, parabola curve होगा. तो इसका अगर equation मिल जाएगा मुझे, whatever be the equation for x जो भी parabolic equation होगा, if I get this equation putting all the values of x, मतलब मान लीजिए कि what I mean to say, let me just explain this thing, very easy to understand. मान लीजिए I have a beam of this kind. Okay, now this is my x-axis, this is my y-axis. Okay, so in this case, if because of some load I have an equation of this, I have an equation of this, मान लीजिए something 4x plus something. Okay, so whenever I put x is equal to, suppose this is 3 meter. Whenever I put x equal to 0,
Whenever I put x equal to 0, I'll get this, the value of y. Y means the deflection part, this action. So I can get this. So based on different value of y, I can get a deflected shape. So this deflected shape, I cannot get by unit load method. Okay, so the curve of the deflected shape cannot be determined. But you can find out deflection at a rotation or rotation at a point whenever it's required. Now deflection किसके वजह से आएगा? We have already mentioned कोई भी load के वजह से आएगा और rotation किस लिए आएगा? Because of some movement. ठीक है? These things has been discussed from approximately your method of consistent deformation part से ही हम लोग इसको discuss कर रहे हैं. Okay, let's move to the problem. Just to give you an example, what actually I mean by unit load method. Okay. So if I'm taking a simple structure just to explain the things. Okay. Let it be a simply supported beam, which if simply supported beam we are considering, maybe that means I'm considering a determinate structures out here just to explain this thing. Right. Let this be A. Let this be B. Let this be C. Let this be D. Let this be 2 meter. BC 1 meter है, ये भी 1 meter. Now let me have a load out here. Suppose there is an UDL out here, which is let us take 10 kilonewton per meter. Okay. And next, I want to take a point. It may be any kind of load. Okay. Let this 10 kilonewton. Now, in the question it is asked. Find deflection at, let's say B. B तक है, UDL B तक है at 2 meters, and I want to find out deflection at this point. Okay. Now, what will be the steps that will be considered? So, so basically, what I need deflection at D. This I need. Okay. Now, as per virtual work, what we do, unit load method, what we do, wherever deflection is asked, wherever deflection is required, put an unit load माने 1 kilonewton by removing all the other loads from the primary structure. Okay. Basically, what I mean,
wherever you need a deflection, शायद B में चाहिए, then put an unit load. Put an unit load by removing all the other loads from the primary structure. मतलब जो original structure with the loads. Okay, that means you need to remove this UDL, you need to remove this point load, 10 kN, and you need to put a 1 kN out here. Now अभी deflection पूछा है. अगर मुझे in this case if they have asked deflection at मान लीजिए B, then क्या होगा? अगर मुझे इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? यहाँ जैसे whenever deflection is asked I put a load, whenever rotation is asked I put a moment. ठीक है? That much only you have to remember. Okay. So let's see. So you have understood this part. So I am just going to just step. So what I'll be doing, I'll be downward. Okay. So I need to, this is B, this is C, this is B, then this is D, then this is C, let this be D, let this be A. So according to the virtual method, what unit load method or virtual method, what I do, I put a 1 kN wherever deflection, जहाँ deflection पूछा है वो उसी चीज पे I put a 1 kN load. Now what I got, remember one thing, I can name these things very easily for your reference. This is actually the real beam. This is actually the real beam. Real beam with actual loading. Actual loading. So I'll put real beam. Real beam will be, I think so, sufficient. This is the real beam. This is the virtual. Okay. This is the virtual. ये हम लोगों ने ये assume किया, हम लोगों ने ऐसे assume किया. Okay, you can check the notes for better this thing also. So as per this unit load method, what actually or virtual work method, so what happens according to this diagram? According to this diagram, listen very carefully and try to relate from here. Okay, load of unit beam. See, I can give you directly the formula, but the thing is that you need to know how the formula comes. Okay, later on you can remember only the formulas if you want, but in some somebody or the other, कोई भी interview हो या this kind of things, you may be asked. I mean, it is asked in most of the cases. People know the formula, but they do not know the basic concept. So I'm just trying to explain out here. Load of unit beam, basically work done deflection of real beam. My point is to write something of this kind. Let me show you one more thing. Let me show you. I just want to write external work done equal to internal work done. Just I want to write this, but considering both the thing. Pehle, we used to consider the only the beam and we have to calculate the internal energy. Internal energy we used to consider the U. But in this case, just because it's the process is different, I put a unit load out here in a virtual system. So the things become a bit different, but the meaning is this only: external work done equal to internal work done. So I can say load of unit beam into deflection of real beam. I'll explain this thing. Real beam equal to
load of unit beam into internal deflection of real beam. Okay, so you have to remember this quite better if you remember this. इसी आधार पे सारा we have to consider. Now this part is actually the external I am talking about. External work done. And this part is the internal. Okay, it's a load of the unit beam. Load of the unit beam concept ये और virtual beam जैसे भी करो load of the unit beam ये ठीक है. Deflection of the real beam. Deflection of the real beam मतलब ये वाला मतलब इसी पॉइंट पे यहाँ डिफ्लेक्शन कितना होगा. डिफ्लेक्शन ऑफ रियल बीम मतलब इस सिचुएशन पे क्या होगा. डिफ्लेक्शन ऑफ रियल बीम होगा डेल्टा बी. सो आई कैन राइट समथिंग ऑफ दिस काइंड. let me write this way. So load of unit beam 1, take a different color, 1 load of unit beam 1 into deflection of real beam. Deflection in real beam मतलब इस situation में what is the deflection of real beam, which is delta b, because we are asked delta b out here. Okay, so delta b कौन सा position है. delta b वो position है where you put the unit load, but you have to consider the real beam out here. Virtual beam into real beam, virtual beam into real beam, but internal. This part is the internal part, this part is the external part. एक बार practice हो जाएगा सब कुछ clear हो जाएगा. Okay, plus now we are considering the extreme cases. कैसे I also consider कि अगर किसी कारण से on extreme cases, which is generally university do not follow, do not push that much, but sometimes in gate and all this kind of things are asked. What they will mention in this question, they will mention the support A settles by 2 mm or 10 mm, whatever. Support A settles मतलब suppose ये वाला because of some loading, because of some factors, it is मतलब ये सिंक हो जाएगा. ठीक है, सिंक मतलब ये नीचे आ जाएगा. मतलब कितना mm से 2 mm से आ जाएगा इसके हिसाब से. So in this situation you have to consider this is also external, so you have to consider that much also. Okay, but most of the cases these things are not given, so this will be 0 only. Okay, but just as a generalized formula तो हम लोग कोशिश करेंगे. तो इसमें क्या होगा, summation of R virtual कहाँ मतलब मान लीजिए A हो गया तो सपोज A in this case suppose A is settled. A settle होने से क्या होगा, R virtual कौन सा होगा, यहाँ का होगा जो यहाँ आएगा. अगर समेशन क्यों यूज किया, because there is a possibility कि they mention कि settle D also support D also settles. मतलब ऐसा दिया है कि support A settles by मतलब आपका कैसा था, support A settles by मतलब support A settles by suppose 2 mm and support D settles by suppose 5 mm. So in this situation you have to add it. So A के लिए I have to use this RA into whatever delta is out here, मतलब जो भी sinking आएगा, and for D I have to use suppose RA into suppose A settles by 2 mm into 2 plus summation is there. अगर D भी settle किया तो RD
into suppose d says by 5 mm, so 5 mm यहाँ आ जाएगा. So this is what I am actually trying to say. If it is mentioned, it is very unlikely that it will be mentioned in their university exam, but you should know the basic things. Okay. Right. So let me first write the formula. R virtual, R virtual, R virtual, R virtual into delta external. Hope you understand this. What is delta external? ठीक है, जो delta यहाँ settle करेगा. So this is the work done. This is the work done externally. अभी internally. Now what I am doing, because it's a beam, बीम में क्या होगा कि ओनली मोमेंट मेनली काम करेगा. ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एम प्रीवियसली व्हाट स्ट्रेन एनर्जी में हम लोग क्या करते थे. स्ट्रेन एनर्जी में हम लोग कुछ ऐसा करते थे ना कि एम इंटू डेल एम बाई डेल एच सी वट एवर इट इज. सो वट एवर बी द मेन रिजल्ट, मतलब अगर बेंडिंग है तो बेंडिंग एम आएगा, shear force है तो shear force का आएगा, तो big formula that we use, the torsion है तो torsion आएगा. तो in this situation just for generalization I am considering all the four forces. ठीक है, तो सब आएगा. सपोज सब आएगा मतलब सब आएगा मतलब I mean axial, I mean bending, I mean shear and I also mean torsion. अगर ये चारों किसी तरह आएगा, ताकि मेनली बेंडिंग ही होता है बीम फ्रेम्स में, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा. उसमें क्या होगा, इंटरनली समेशन u into delta L. Now what is u? U is the axial force of the virtual beam due to virtual force. ठीक है, L मतलब एक वर्चुअल आएगा एक रियल आएगा. ओके, नाउ डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज द, लेट मी राइट आउट हियर. यू क्या है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सियल फोर्स कहाँ, वर्चुअल बीम पे, वर्चुअल बीम पे ड्यू टू वर्चुअल फोर्स. ठीक है, और डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है एक्सियल डिफॉर्मेशन ड्यू टू external loading, or maybe I'll not use external, I'll use actual loading. Actual loading. So you hope you understand. Now U is an internal energy. ठीक है, इंटरनल मतलब ये जब लोड दोगे देन इट विल, द इंटरनल एनर्जी विल बी स्टोर्ड. तो इंटरनल एनर्जी ड्यू टू, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, तो यही इंटरनल एनर्जी है. तो दिस इंटरनल एनर्जी इज फॉर वर्चुअल मल्टीप्लाइड बाय सेम एज ये हम लोग सिमिलर है जो मैक्सवेल बेटी पढ़ा था हम लोगों ने, मैक्सवेल बेटीज थ्योरम. अगर क्लियर नहीं है तो वापस जा सकते हैं, मैक्सवेल बेटीज थ्योरम नोट्स में चेक कर सकते हैं कि मैक्सवेल बेटीज थ्योरम क्या है. इट इज सिमिलर टू दैट. ठीक है, you'll understand in the course, you'll understand once I write the entire. Okay, right again. So it is summation axial force in the virtual beam multiplied by axial deformation or axial deflection due to actual loading. That means in the real beam. Okay. Now summation Q.
समेशन इसलिए because we have to do the things in a in member wise. That means हम लोग u कैसे निकालेंगे, u निकालेंगे a b b c c d, so it becomes जैसे लिमिट वगैरह देके, so something of this kind. Okay, this I can also convert, uh, to an integration also. ठीक है, कोई इंटीग्रेशन 0 to l लेके भी कर सकता हूँ, तो लेटर ऑन करेंगे. Okay, so this is the axial part. Next, summation moment into d theta. Okay, let me change a bit. थोड़ा change कर देते हैं. मैं small u use कर रहा हूँ. ये small u क्यों use कर रहा हूँ? Because so that I can understand this is the for virtual being. जहाँ भी small नजर आए, small letter, so it is, that means I am considering the virtual being, और clear हो जाएगा. So small m bending moment in the virtual beam due to virtual force due to this bending moment due to this, that means m क्या है? m होगा, मैं अगर सिंपली समझाऊं, m होगा बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वर्चुअल फोर्स, दैट मींस ड्यू टू 1 किलो न्यूटन क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा इस पॉइंट पे, वही है. ठीक है, तो स्मॉल n इनटू डेफिनेटली डेल्टा थीटा डी थीटा. तो डी थीटा क्या है? एक्चुअल लोडिंग में यहाँ रोटेशन क्या आ रहा है. ठीक है, मतलब आई हैव टू कंसीडर वर्चुअल into real, virtual into real, something of this kind, but it should be internally. Okay, hope you understand this part. You can go back to the pause here, think about, मतलब थोड़ा सोचिए इसके बारे में तो और क्लियर हो जाएगा. ये हो गया मोमेंट. हम लोग के पास शेयर भी हो सकता है, तो शेयर हम लोग स्मॉल क्यू से कर रहे हैं. स्मॉल क्यू मतलब इट इज इन द वर्चुअल वन मल्टीप्लाइड बाय शेयर. इन शेयर के लिए क्या आता है, जैसे m के लिए रोटेशन आता है, शेयर के लिए शेयर स्ट्रेन आता है. आई थिंक सो शेयर स्ट्रेन आप लोगों ने डेफिनेटली मॉस में पढ़ा होगा. हिट द फाइन. सो del q into summation q into phi dx. ठीक है, प्लस समेशन टॉर्क है, टॉर्क इनटू del phi dash. तो T क्या है? टॉर्क ड्यू टू वर्चुअल फोर्स, and the theta dash is the rotation due to this torque in the real beam. So real ये आ गया. अच्छा, मैं और क्लियर कर देता हूँ ये चीज. ये आएगा यहाँ डिफरेंट कलर, ब्लू कलर. दिस इज फॉर हियर, दिस इज हियर, this is for this, theta is for here. Okay, q is here, phi is here. So you see the pattern out here. This is virtual, this is here. Okay, one here, delta b here, r virtual here, external here. So it is very easy to understand actually. एक बार अगर दिमाग पे बैठा लिया, so I don't think so this is very. So it is better if you remember this thing. It will really help you. Okay. In the notes I have given very clearly. Notes फिर से आप लोग पढ़ सकते हैं अगर interested हो. What is del u del l, इसको मैं notes के फॉर्मेट में दिया है, तो you don't have to worry. Okay. इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ. ये तभी होगा, this equation होगा when all the forces is acting, but most of the cases
only this part is working in beams and frames. And moreover, if settlement is not there, even this part, this entire part becomes zero. So it doesn't really matter. Okay. So what I can do, I can I can simplify it. Simplify कैसे करूँगा? ये सॉम में और क्लियरली पढ़ेंगे आप लोग. From bending formula, I am not going into the details. Okay, I am not going into the details. M by I E by R भी एक फॉर्मूला था, और हम लोग का जब ये रोटेशन होगा पास, so basically I can relate d theta. I have already this thing will be like used in mechanics of solid, so I'm not going into deep. Just for now you understand that you can relate this and this. Okay, so ये अगर है तो मैं what I can do, I can actually convert all these things. I can, ये सब जितना भी है, I can convert. So if I convert based on this thing, based on this, based on if I use KQ by G into A, okay, into dx, I can use this. I can use also for dx dt. I can use this. Now I am pretty sure you have studied all these things in mechanics of solid. K is the form factor, इसको form factor कहते हैं, ठीक है. Q Q क्या है आपका? Q आपका shear force है due to actual loading, ठीक है. G आपको तो पता है क्या इलास्टिक कांस्टेंट है, एरिया. T is the torque, elastic constant, polar moment of inertia. ओके, ये पहला चैप्टर में आई थिंक सो इलास्टिक कांस्टेंट जब आप लोगों ने पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इलास्टिक कांस्टेंट, दिस थिंग्स हैज बीन टॉट, ठीक है. हालांकि हम लोग को इतना जरूरत नहीं है, हम लोग यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली आस्क्ड. सो इफ आई कैन कन्वर्ट, आई विल कन्वर्ट समथिंग ऑफ दिस काइंड. अगर मैं ये सारा चीज यहाँ कन्वर्ट कर दूं, दिस 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 दिस, इफ आई कन्वर्ट इट इवन दिस, so I get a simpler formula which is 1 into delta VB. VB मतलब क्या है, ठीक है, this way VB. okay, तो डेल्टा VB क्या है? डेल्टा VB है एक्चुअल डिफ्लेक्शन, एक्चुअल डिफ्लेक्शन मतलब रियल बीम पे, हियर रियल बीम ड्यू टू वर्चुअल फोर्स, ठीक है. इस लोडिंग के वजह से यहाँ क्या इस पॉइंट पे क्या रिफ्लेक्शन आएगा, दैट वी आर कंसिडर. सो आई हैव यूज बी और बी. बी मैंने जिस पॉइंट पे चाहिए, बी मैंने वर्चुअल फोर्स, सो दैट यू रिमेंबर. सो बी बी प्लस ये सब तो सेम, समेशन ऑफ आर वर्चुअल. इसको बेस्ट समझ में आएगा if you keep on writing as I write. okay, मैं अगर समेशन को इसमें करूं, so del L को हम लोग ये फार्मूला ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, PL by AE रिफ्लेक्शन, ठीक है, मॉस का पार्ट है. ये कैसे किया था, जब आप एक बार यूज्ड टू टेक and there is a loading, so this is del L
ठीक है, del L means this del L. I can find out. This is your elongation, so I can find out what is the elongation of it. So we are not going into that part. It will be a long lecture then. Okay, so I can write here PL by AE PL plus summation of L, यहाँ क्या था, M, d थीटा का जगह मेरे को चेंज करना है, स्मॉल m तो था ही, ठीक है, d थीटा का जगह ये M dx by EI प्लस 0 to L शेयर के लिए Q, ये पुट करेंगे, ठीक है. See, I'm not explaining more of this form factor Q, ये सब क्या है, these are already part of your mechanics of solid, एकदम basic सर पहला 2 चैप्टर में ही था, है अभी भी. I have checked this thing syllabus. I think so, otherwise it will become a long lecture. और torsion के लिए, torsion वाला पार्ट था यहाँ, small t E by Gj, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग को ये मिल सकता है, ठीक है. But what you need to remember for simplicity, जो हम लोग को हमेशा यूज होगा, for beams, frames, all these things, I can use where there is no settlement, where no settlement, there is no settlement means there is no sinking of support, there is no sinking of support. In that case, dispatch becomes 0, कि del b 0 होगा, अगर सेटलमेंट नहीं है तो सिंकिंग नहीं है तो del b 0, मतलब ये पार्ट 0 होगा. I made a I think so this is not, I made a mistake out here, ये आपका external था ना, I think so I have mentioned out here external. ओके, अगर सिंकिंग नहीं है तो हम लोग का ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है. तो बचा क्या रहा, 1 into delta BB. This will change. In this situation, B पे they are asking. In this situation, they are asking at B, so I have used B out here. तो आप समझ सकते हैं जहाँ भी जरूरत हो, ठीक है. और let me forget about this thing. I'll put a direct equation. 1 into delta equal 0 to L, जहाँ तक भी हो, small m capital M divided by EI into dx. So I get a formula. This is the formula you will be using. तो ठीक है, तो यहाँ डेल्टा तो आपको पता है, डेल्टा इज द रिफ्लेक्शन, 1 इज द वर्चुअल लोड, ठीक है. 0 to L जो भी लिमिट होगा, मतलब मैं अगर AB के लिए फाइंड करूं तो क्या होगा, 0 to BC के लिए क्या होगा, 0 to 1, ठीक है.
CD के लिए क्या होगा 0 to 1, ठीक है, डिपेंडिंग हम लोग ओरिजिन कहाँ ले, ठीक है, डिपेंडिंग यहाँ ओरिजिन अगर ए ले लिया यहाँ ए बी के लिए तो 0 to 2, BC के लिए अगर ओरिजिन मैंने बी ले लिया तो 0 to 1, ठीक है, CD के CD के लिए अगर ओरिजिन सी ले लिया तो 0 to 1. So those kind, I think so this is already covered in the last unit. Okay, तो कैपिटल एम क्या है, यहाँ मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ. कैपिटल है एम है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड. ये सब लोड के लिए जो भी एम आएगा उस पॉइंट पे, ठीक है. फिर स्मॉल एम क्या है, स्मॉल है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड, ठीक है. यूनिट लोड कौन सा यूनिट लोड, वेर एवर यूनिट लोड वेयर द डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यूनिट लोड वेयर डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है. वरना क्या हो जाएगा, मैंने अगर ये चेंज कर दिया, हाँ, मैंने अगर ये चेंज करके किसी तरह 1 कर दिया तो इट विल बिकम अ डिफरेंट सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि wherever 1 is there you find a reflection out here. Wherever unit load is, wherever deflection is required, you put a unit load in the virtual system and you get it. Right. Right. So unit load where deflection is required. ठीक है, वही I can also say if I find a rotation 1 into rotation 0 to L, ठीक है, M dash capital M divided by EI into dx. This is another formula if rotation is asked. Okay, of rotation is asked. So rest you know theta is the rotation wherever it is asked, and M dash क्या है, M dash bending moment due to unit, इसमें लोड नहीं होगा, इनमें रोटेशन होगा. कहाँ रोटेशन, जैसे मुझे अगर I already explained this, ठीक है, if I was asked to find out rotation at B, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ एक मोमेंट देता था. कितना मोमेंट का वैल्यू 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर मीटर 1 किलोमीटर मीटर. आई वुड हैव पुट अ मोमेंट. आई विल नॉट कंसर्न, कोई भी कंसर्न नहीं है कि मैं ऐसे डालूं या मतलब एंटी क्लॉकवाइज. इधर यू कैन पुट दिस वे एंटी क्लॉकवाइज और यू कैन पुट दिस वे. यू डोंट हैव टू वरी, लास्ट में पता ही लग जाएगा. यू कैन चेंज इट. Hope you have understood till now. ठीक है. So next we'll be doing a numerical because of this. Okay.